श्रीकार्तिकेय कवच देव्युवाच ये ये मम सुता जाता सेते कंसनिषूदिताः कथं मे ते सन्तन्तिष्ठेद ब्रूहि मे मुनिपुङ्गव। नारद उवाच येनोपायेन लोकानां सन्तन्ति चिरजीविता ते सर्वं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। विनियोग ओमस्य स्कन्दाक्षय कवचस्य नारद ऋषिरनुष्टुप् छन्दः सेनानीर्देवता वत्सरक्षणे विनियोगः। बाहुलेयः शिरः पायात् स्कन्धौ शङ्करनन्दनः मुण्डं मे पार्वती पुत्रो हृदयं शिखिवाहनः। कटिं पायाच्छक्तिहस्तो जङ्घे मे तारकान्तकः। भूमे रक्षतां पादौ सेनानिर्वत्समुत्तमं स्कन्दो मे रक्षतामङ्गं। दश दिग्गग्निभूर्मम षाड्मातुरो भयघोरे कुमारो व्यातशंसानके। इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं धृत्वा पुत्रमवाप्नोति सुभव्यं चिरजीविनम्। नारदस्य वचः श्रुत्वा कवचं बिभृतं तया कवचस्य प्रसादेन जीववत्सा भवेत् सती। कवचस्य प्रसादेन तस्या पुत्रो जनार्दनः। धारिकायास्तथा पुत्रो निर्जरैरपि दुर्जया। कार्तिकेय कवच देव्युवाच ये ये मम सुता जाता सेते कंसनिषूदिताः कथं मे ते सन्तन्तिष्ठेद ब्रूहि मे मुनिपुङ्गव। नारद उवाच येनोपायेन लोकानां सन्तन्ति चिरजीविता ते सर्वं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। विनियोग ओमस्य स्कन्दाक्षय कवचस्य नारद ऋषिरनुष्टुप् छन्दः सेनानीर्देवता वत्सरक्षणे विनियोगः। बाहुलेयः शिरः पायात् स्कन्धौ शङ्करनन्दनः मुण्डं मे पार्वती पुत्रो हृदयं शिखिवाहनः। कटिं पायाच्छक्तिहस्तो जङ्घे मे तारकान्तकः। भूमे रक्षतां पादौ सेनानिर्वत्समुत्तमं स्कन्दो मे रक्षतामङ्गं। दश दिग्गग्निभूर्मम षाड्मातुरो भयघोरे कुमारो व्यातशंसानके। इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं धृत्वा पुत्रमवाप्नोति सुभव्यं चिरजीविनम्। नारदस्य वचः श्रुत्वा कवचं बिभृतं तया कवचस्य प्रसादेन जीववत्सा भवेत् सती। कवचस्य प्रसादेन तस्या पुत्र
पुत्रो जनार्दनः धारिकायास्तथा पुत्रो निर्जरैरपि दुर्जया कार्तिकेय कवच देव्युवाच ये ये मम सुता जाता सेते कंसनिषूदिताः कथं मे ते सन्तन्तिष्ठेद ब्रूहि मे मुनिपुङ्गव नारद उवाच येनोपायेन लोकानां सन्तन्तिश्चिरजीविता तते सर्वं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय विनियोग ओमस्य स्कन्दाक्षय कवचस्य नारद ऋषिरनुष्टुप् छन्दः सेनानीर्देवता वत्सरक्षणे विनियोगः बाहुलीयः शिरः पायात् स्कन्धौ शङ्करनन्दनः मुण्डं मे पार्वती पुत्रो हृदयं शिखिवाहनः कटिं पायाच्छक्तिहस्तो जङ्घे मे तारकान्तकः मे रक्षतां पादौ सेनानिर्वत्समुत्तमं स्कन्दो मे रक्षतामङ्गं दश दिग्गग्निभूर्मम षाड्मातुरो भयघोरे कुमारो व्यातशंसानके इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं धृत्वा पुत्रमवाप्नोति शुभव्यं चिरजीविनम् नारदस्य वचः श्रुत्वा कवचं बिभृतं तया कवचस्य प्रसादेन जीववत्सा भवेत् सती कवचस्य प्रसादेन तस्या पुत्रो जनार्दनः धारिकायास्तथा पुत्रो निर्जरैरपि दुर्जया कार्तिकेय कवच देव्युवाच ये ये मम सुता जाता सेते कंसनिषूदिताः कथं मे ते सन्तन्तिष्ठेद ब्रूहि मे मुनिपुङ्गव नारद उवाच येनोपायेन लोकानां सन्तन्तिश्चिरजीविता तते सर्वं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय विनियोग ओमस्य स्कन्दाक्षय कवचस्य नारद ऋषिरनुष्टुप् छन्दः सेनानीर्देवता वत्सरक्षणे विनियोगः बाहुलीयः शिरः पायात् स्कन्धौ शङ्करनन्दनः मुण्डं मे पार्वती पुत्रो हृदयं शिखिवाहनः कटिं पायाच्छक्तिहस्तो जङ्घे मे तारकान्तकः मे रक्षतां पादौ सेनानिर्वत्समुत्तमं स्कन्दो मे रक्षतामङ्गं दश दिग्गग्निभूर्मम षाड्मातुरो भयघोरे कुमारो व्यातशंसानके इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं धृत्वा पुत्रमवाप्नोति शुभव्यं चिरजीविनम् नारदस्य वचः श्रुत्वा
श्रुत्वा कवचं बिभ्रितं तया कवचस्य प्रसादेन जीववत्सा भवेत् सती कवचस्य प्रसादेन तस्या पुत्रो जनार्दनः धारिकायास्तथा पुत्रो निर्जरैरपि दुर्जया कार्तिकेय कवच देव्युवाच ये ये मम सुता जाता सेते कंसनिषूदिताः कथं मे ते सन्तन्तिष्ठेद ब्रूहि मे मुनिपुङ्गव नारद उवाच येनोपायेन लोकानां सन्तन्ति चिरजीविता ते सर्वं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय विनियोग ओमस्य स्कन्दाक्षय कवचस्य नारद ऋषिरनुष्टुप् छन्दः सेनानीर्देवता वत्सरक्षणे विनियोगः बाहुलीयः शिरः पायात् स्कन्धौ शङ्करनन्दनः मुण्डं मे पार्वती पुत्रो हृदयं शिखिवाहनः कटिं पायाच्छक्तिहस्तो जङ्घे मे तारकान्तकः मे रक्षतां पादौ सेनानिर्वत्समुत्तमं स्कन्दो मे रक्षतामङ्गं दश दिग्गग्निभूर्मम षाड्मातुरो भयघोरे कुमारो व्यातशंसानके इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं धृत्वा पुत्रमवाप्नोति शुभाभ्यं चिरजीविनम् नारदस्य वचः श्रुत्वा कवचं बिभ्रितं तया कवचस्य प्रसादेन जीववत्सा भवेत् सती कवचस्य प्रसादेन तस्या पुत्रो जनार्दनः धारिकायास्तथा पुत्रो निर्जरैरपि दुर्जया कार्तिकेय कवच देव्युवाच ये ये मम सुता जाता सेते कंसनिषूदिताः कथं मे ते सन्तन्तिष्ठेद ब्रूहि मे मुनिपुङ्गव नारद उवाच येनोपायेन लोकानां सन्तन्ति चिरजीविता ते सर्वं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय विनियोग ओमस्य स्कन्दाक्षय कवचस्य नारद ऋषिरनुष्टुप् छन्दः सेनानीर्देवता वत्सरक्षणे विनियोगः बाहुलीयः शिरः पायात् स्कन्धौ शङ्करनन्दनः मुण्डं मे पार्वती पुत्रो हृदयं शिखिवाहनः कटिं पायाच्छक्तिहस्तो जङ्घे मे तारकान्तकः मे रक्षतां पादौ सेनानिर्वत्समुत्तमं स्कन्दो मे रक्षतामङ्गं दश दिग्गग्निभूर्मम षाड्मातुरो
भयघोरे कुमारो व्यात शमशानके इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं धृत्वा पुत्रमवाप्नोति शुभव्यं चिरजीविनम्। नारदस्य वचः श्रुत्वा कवचं बिभृतं तया कवचस्य प्रसादेन जीववत्सा भवेत् सती। कवचस्य प्रसादेन तस्या पुत्रो जनार्दनः धारिकायास्तथा पुत्रो निर्जरैरपि दुर्जया। कार्तिकेय कवच देव्युवाच ये ये मम सुता जाता सेते कंसनिषूदिताः कथं मे ते सन्तन्तिष्ठेद ब्रूहि मे मुनिपुङ्गव। नारद उवाच येनोपायेन लोकानां सन्तन्ति चिरजीविता तते सर्वं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। विनियोग ओमस्य स्कन्दाक्षय कवचस्य नारद ऋषिरनुष्टुप् छन्दः। सेनानीर्देवता वत्सरक्षणे विनियोगः। बाहुलीयः शिरः पायात् स्कन्धौ शङ्करनन्दनः। मुण्डं मे पार्वती पुत्रो हृदयं शिखिवाहनः। कटिं पायाच्छक्तिहस्तो जङ्घे मे तारकान्तकः। भूमे रक्षतां पादौ सेनानिर्वत्समुत्तमं। स्कन्दो मे रक्षतामङ्गं दश दिग्गग्निभूर्मम। षाड्मातुरो भयघोरे कुमारो व्यात शमशानके इति ते कथितं भद्रे कवचं परमाद्भुतं धृत्वा पुत्रमवाप्नोति शुभव्यं चिरजीविनम्। नारदस्य वचः श्रुत्वा कवचं बिभृतं तया कवचस्य प्रसादेन जीववत्सा भवेत् सती। कवचस्य प्रसादेन तस्या पुत्रो जनार्दनः धारिकायास्तथा पुत्रो निर्जरैरपि दुर्जया। इति श्री